Welcome to my today's lecture. We have so far discussed something about friction and laws of frictions. In fact, laws of limiting frictions, and also we have seen that is how we discuss centripetal and centrifugal force. Well, continuing the motion in circular path, today we will discuss the leaning of bicycle or leaning of cyclist. You can see that everyone just well aware of cycling. You know, when you cycle, when you just ride your bicycle, then at that circular turn, every time it is very obvious it always bend towards the center of the circle. But you think that it is a very natural phenomenon, but why actually you do this? जब भी आप साइकिल चलाते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे सर्कुलर टर्न होता है तो आप थोड़ा लेफ्ट की तरफ मुड़ जाते हो, सेंटर की तरफ मुड़ जाते हो, अपने आप ही से लोग मुड़ जाते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये चीज कभी सोचा नहीं होगा. तो हम लोग इस डायग्राम को देखकर ये समझ सकते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है. अच्छा, अब ये समझ लीजिए कि हम लोग ने क्या किया कि सोचा कि नहीं, कोई ऐसा लड़का है कि कोई इज राइडिंग इज बाइसिकल एंड इवन ड्यूरिंग द सर्कुलर टर्न ही इज स्टिल कीपिंग हिमसेल्फ एरेक्ट. वो अपने आप को बिल्कुल सीधे ही रखता है और बेंड नहीं करता है. तब होता है क्या है कि जो उसका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इट्स द रिएक्शन ऑन हिम इज वर्टिकली अपवर्ड. दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, बट एट द सेम टाइम फ्रॉम वेयर ही गेट दैट force and that is centripetal force to continue his circular motion, he has no source. On the contrary, when he hold the handle, then during left turning is maximum force is on right hand side of the handle, and because of which there is a possibility of turning out, that he must overturn. तो ये बाहर की तरफ गिरने का जो टेंडेंसी होता है, उससे बचने के लिए कहते हैं कि आप थोड़ा लीन करके चलें. नाउ लेट अस see this the diagram. Here we can see that a person who is riding his bicycle, and at a particular angle theta from the vertical, he observes that he is running properly. Well, now let us see. This is the point where his bicycle is on the level of road, and then just passing through that, it is the normal reaction force R. Okay. Once you get that, then obviously what you observe that his reaction force can have two components, R cos theta and R sin theta. Clear? Here, remember, R cos theta is balanced by the weight of the system. R cos theta is equal to mg. This is equation number 1. And on the other hand, since in order to run the bicycle, in order to ride the bicycle and just to move on circular track, he needs some centripetal force, mv square upon r, and that must be given by this r sin theta. R sin theta equal to mv square by r. Clear? And from this is equation number 2. From 1 and 2 we have sin theta upon cos theta equal to v square by rg, or tan theta equal to v square by rg, or theta equal to tan inverse v square by rg. That means, remember, the value of theta is needed to be more if velocity is very high, number 1. Or what is the next possibility? If r is very small, that is for very smaller circle, or if the circle of very narrow turn, sharp turn, then radius is very less, and in that case v square upon rg is very large, and therefore every time theta is taken from vertical, and we can get this system. Okay, for this we can have one very small thing. You can very easily observe that there are two tracks. One is inner red one and outer is black one. Inner has
less radius R1 and outer has radius R2. Okay, its radius is larger. Well, for example, I won't have that original bicycle, but I may just consider this is the cross-sectional view of the bicycle, and suppose we take it here. We can see during circular turn it makes like this. Okay, but when we have this in the inner path, we can see it has to bend more. It has to bend more because angle is more. From where we are counting the angle, actually the main thing is, I am just considering this as the vertical line, and for this path, this is the angle from vertical, and for this angle is further increased. You can very easily say vertically, from vertical plane the angle is more for smaller path, for sharp turn, and it is relatively less in the case of larger circular turn. And this is very easily proved by this diagram. And here we have seen that why leaning of bicycle is needed in order to maintain the circular motion along along circular track. A cyclist has to bend toward the center of circle with some angle theta from vertical. Okay. Now after this, we will take the motion of car on level track. Motion of a car on a level curved road. Now, as the diagram explains, you can see a car is moving. We are considering the cross-sectional view of the car. So the out of 4, only 2 wheels can be seen at a time. Okay. And after this, what we have, suppose here it is the R, it is the center of the circular path. In the circular turn, what happened? In order to maintain the car to move, the frictional force must be greater than or equal to the centripetal force. Now, from where frictional force comes, it is very obvious that whenever we discuss the motion of car, then suppose we are having this, that car always has 4 wheels, okay, 2 front wheels and 2 rear wheels, okay, that is, this is one pair, another pair is this one. And the same way, if your road turning is here, your center of the circle is here, then
this is your inner wheel and this is your outer wheel. Okay. Now what happens, suppose I am discussing here on the level road, जो प्लेन रोड पे आपको गाड़ी चला रहे हैं मान लीजिए, तो ये जब देख रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये टर्न करते हैं तो ये हमेशा अपने जगह से थोड़ा आउटर प्ले खिसक जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मान लीजिए पहले ये यहाँ पे था, तो जैसे ये टर्न करेगा तो ये अपने जगह से थोड़ा इधर की ओर हट जाता है। पहले यहाँ पे था, जैसे ही सर्कल में टर्न करेगा तो ये थोड़ा अपने जगह से हिल जाएगा। सिमिलरली ये वाला व्हील भी अपने जगह से ये हिल जाएगा। तो इसके मतलब क्या है कि एवरी टाइम वी ऑब्जर्व दैट द व्हील्स हैज अ टेंडेंसी और द टायर्स ऑफ द व्हील्स हैज अ टेंडेंसी to move away from the center. Therefore, due to this, we can see the frictional force is always directed toward the center because the motion of the wheel is away from the center. Therefore, the frictional force acting on the wheel is this one. R1 is the reaction force on this sphere, on this wheel, that is inner wheel, and it is outer wheel. Clear? इतना आपको दिख रहा है। तो इसके मतलब का टोटल फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? इफ यू वांट टू नो टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, देन F मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू योर म्यू R1 म्यू R2 म्यू R1 प्लस R2। ये हो जाएगा आपका टोटल फ्रिक्शनल फोर्स। Now, you can see this total frictional force must be equal to the mu times mg also. Mu times mg, because mg is the net weight of the system. And from this, we can see that in order to maintain the proper circular motion, in order to ensure that the car must be exactly on the road, प्लेन रोड है, ये लेवल रोड है। लेवल रोड मतलब कहीं पर भी ऊंचा नीचे ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टल रोड के लिए दिया गया। देन व्हाट वी हैव, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो यह आएगा v² मस्ट बी स्मॉलर देन और इक्वल टू म्यू rg। तो v का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? √μ rg। यानी कि आप ये समझ लीजिए ऐसे रोड पे अगर आपको मालूम है टायरों के बीच, टायर रोड के बीच फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल कांस्टेंट है, फ्रिक्शन है म्यू, रेडियस मालूम है, g मालूम है, तो √μ rg से ज़्यादा स्पीड चलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इससे कम चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कम तो चल ही सकते हैं और मैक्सिमम स्पीड इतने से चल सकते हैं। √μ rg, रिमेंबर इट इज एग्जैक्टली यूज फॉर अ कार यूज ऑन अ लेवल रोड। कार को जब लेवल रोड में, प्लेन रोड में चलना पड़े मजबूरी में, ऐसे मैं बता दूं जो पहाड़ के रास्ते में हो या कहीं पर भी हो, मेन रोड पे भी हो, फ्लाईओवर पे भी हो, हमेशा थोड़ा बेंड कर देते, तरह ऊपर उठा देते, बैंक बना देते। लेकिन अगर जैसे कोई ग्राउंड में आपको गोल गोल घूमना है, कहीं पर कुछ सर्कस हो रहा है, कुछ हो रहा है, इन सच केस यू हैव टू हैव सर्टेन स्पीड, बियॉन्ड दैट इट विल ओवरटर्न, ये गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी कम बैंकिंग ऑफ रोड। Yes. Now banking of road. As we have seen that for bicycle or any two-wheeler, or say any person who is riding motorcycle, motorbike, scooter, or any other two-wheelers like scooty, etc.
what you observe that every turning at every circular turn we have to lean towards the center of the circular path. वो हमेशा होता है कि सेंटर की ओर हमको मुड़ना पड़ता है, लेकिन जब मुड़ना पड़ता है तो अब ये फोर व्हीलर के लिए अगर मैं सोचे तो इसके लिए कैसे होगा. देखिए पहले भी मैंने कहा कि फोर व्हीलर हैज फोर व्हील्स एंड एक पेयर सामने होता है, एक पेयर पीछे होता है. दोनों पेयर में एक इनर पेयर, एक इनर व्हील होगा, एक इधर अंदर की ओर जो सर्कुलर टर्न के साइड में होगा, एक बाहर साइड में होगा. तो होता क्या है कि जैसे मैंने प्लेन रोड पे तक बता दिया कि प्लेन रोड पे पूरा पूरा फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है. यहाँ पर फ्रिक्शन को अगर ना भी कंसिडर करें, खाली इनका रेजोल्यूशन और वेक्टर से हम देखते तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या होता है कि सर्कुलर टर्न के समय बाहर वाला पहिया थोड़ा उठ जाता है. आप देख सकते हैं कि जैसे ये है, यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस इज एनी ऑफ द पेयर आइदर फ्रंट और रेयर. और ये सर्कुलर टर्न है. जैसे ही हम लोग टर्न करते हैं देखिए अंदर वाला कांटेक्ट में है रोड के, ऊपर वाला देखिए थोड़ा रोड से उठ गया ऊपर. तो जब रोड से उठ गए इसके मतलब क्या है? रोड से उठने के मतलब ये है कि वी हैव टू रेज द आउटर एज ऑफ द रोड. हमको बाहर के पोर्शन जो है थोड़ा ऊंचा कर रहे हैं तो रोड सही चलेगा. तो लेवल रोड की तरह जैसे ये लेवल रोड है ऐसे चल रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीधे सीधे चल रहे हैं. लेकिन जैसे सर्कुलर टर्न होगा आप देख सकते हैं कि पहले वाला रोड इनर वाला व्हील तो रोड के कांटेक्ट में है और ऊपर वाला दूसरे वाला इट इज मूव अपर साइड. इट इज नो लॉन्गर in contact with the road but rather it is slightly upper. Okay, now if it is slightly at upper point means it is other than the road, then what will happen? Then it means that we can very easily, we have to make the road slightly raised on outer side of the road. Remember this is inner side of the road because ultimately this is the circular turn and here we can just observe that inwardly it is directly in contact but outwardly it is no longer in contact but rather it is made like this. तो साइड वाला जो अंदर वाला रोड जो है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड से कनेक्टेड है, बिल्कुल टच कर रहा है. लेकिन जो बाहर साइड वाला जो रोड आपको दिख रहा है ये थोड़ा उठा हुआ है. तो दिस टाइप ऑफ रोड इज कॉल्ड बैंक रोड नंबर 1. दिस टाइप ऑफ रोड इज कॉल्ड बैंक रोड एंड द एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और द एंगुलर इंक्लिनेशन ऑफ सच रोड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग. थीटा इज कॉल्ड angle of banking. Yes, we have said theta is your angle of banking and it is the angle of inclination of the bank road from horizontal direction. Okay, now what happens from the diagram? It is very clear. If R is the reaction force, then it can be resolved into two components. R cos theta balances with the weight mg and R sin theta provides the centripetal force. From this sin theta upon cos theta we have v square by rg, that is tan theta equal to v square by rg or theta equal to tan inverse v square by rg. From that we have seen that theta we need larger theta, that means greater slope like this if we need to speed up. Okay, but if the radius is very large, then theta has to be very small. Okay, this is how we can see that theta can be increased when R is less, and if R is more, then theta has to be less. Okay, and if R remains constant but speed is more, then theta has to be
more in that case. That means even it can work with a larger inclination of the road. In that way, we have seen that how we solve different type of situation, abandoning a road and all other things. And with this, we have almost completed the chapter. We can just move to some numerical problem, one or two numerical problem, then only we will wind up the chapter. You can just observe that we are having two numericals associated with the current topic. First one is find the maximum speed at which a car can take turn round a curve of 30-meter radius on a level road if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.4 and g is 10 meter per second square. Second one is a cyclist riding at a speed of 14√3 meter per second takes a turn around a circular road of radius 30√3 meter. What is the inclination to the vertical? Two questions are there. It is connected to leading of bicycle and it is connected to the motion of car on level road. Okay, let us solve. Solution number 1. Now, as the speed is there, it is find the maximum speed. Formula maximum speed is root mu rg. Mu is 0.4, r is 30 meter, g is 10 meter per second square. That means it is 120 around 120 meter square per second square. And you know 121 is the square of 11, therefore it is approximately 11 meter per second. 11 meter per second. This is first one. Come to second one. Solution 2. Okay. In this solution, what we have to have this speed of bicycle and this much. Radius is also given. Here we know tan theta equals to v square by rg. Okay. It is the angle of inclination from vertical, and v is 14√3 into 14√3, okay, upon r is your 20√3. G is not given, that means we take 9.8. Okay, this point cancel this decimal, this 0. And the 98 into 2, 196, 14, 196, and they were √3 cancel out. We ultimately have a √3, that is equal to tan 60. Therefore, theta from vertical is 60 degree. So this is how we solve these two problems. And there could be other type of questions related to friction and other. They are given in the attached notes. You just go through them and have better practice with all the questions from NCERT book and other. Okay. With that, we finish the chapter, and next time we will take with some new chapter. Thank you.